Hello everyone. In a previous class, we discussed about the various type of losses occur in DC machine. So in this lecture, we will study about what is the testing of DC machine, means how to test a DC motor as well as the DC generator, the type of testing method like direct testing method and indirect method. After this, we will move on Swinburne test of the DC machine. Next is a regenerative or Hopkinson test of the DC machine. After this, we will study about retardation or running down test of the DC machine. And finally, the reference of this presentation. So in this lecture, we will learn or cover all these topics one by one. So let's start. With the topic testing of DC machine introduction. टेस्टिंग एक्चुअली हम करते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग? व्हाई वी रिक्वायर अ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन? एक्चुअली टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारी जो मशीन जो हमने डिज़ाइन की है, बनाई हुई है, वो कितनी एफिशिएंट है। अगर उसमें लॉसेस कम हो रहे हैं तो हमारी मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छी कैटेगरी या अच्छी मशीन कहलाएगी। अगर उसमें लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे उसकी एफिशिएंसी कम होगी और वो मशीन जो है वो गुड मशीन नहीं कहलाएगी। तो टेस्टिंग का मेन पर्पस होता है टू फाइंड आउट दी losses, and by using the losses to find out the efficiency of the machine. So there are several tests that are conducted upon a DC machine, means generator or motor, to judge its performance. और simple words में हम बोल सकते हैं कि मशीन की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ मशीन करते हैं। One important test is performed to measure the efficiency of a DC machine. The efficiency of a DC machine depend upon its losses. प्रीवियस वाली क्लास में हमने लॉसेस स्टडी किए हैं, जो हमारे फिक्स लॉसेस होते हैं और वेरिएबल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था। The smaller the losses, then greater it's the efficiency of the machine and vice versa. Means लॉसेस हमारे जितने कम होंगे, मशीन उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो लॉसेस को कैसे निकाल सकते हैं हम? बाय यूजिंग द टेस्टिंग ऑफ द मशीन। The consideration of losses in a DC machine is important for two principal reasons. First, losses determine the efficiency of the machine and appreciable influence its operating cost. Secondly, losses determine the heating of the machine and hence the power output that may be obtained without under deterioration of the insulation. The main test used for DC machines are open circuit test, in short OCC, short circuit test is called in short SC test, or the characteristics of this test is called SCC, means short circuit characteristics, and third one is a load test. इसके अलावा भी जो टेस्ट हम करते हैं डीसी मशीन्स पे वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट, जो कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ऑफ द टेस्टिंग का, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ये हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में आगे चल के देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और लोड टेस्ट, ये क्या होते हैं।
So the first one is open circuit test. The open circuit test is needed to determine the open circuit characteristics, in short OCC, or magnetizing characteristics of the DC machine. The open circuit test gives the MMF and hence the excitation current or field current needed to generate the required voltage on no load at the fixed speed. The open circuit characteristics curve shows the variation of induced EMF as a function of field current at constant speed and zero load current. So this is the curve, or we can say that open circuit characteristics of DC machine, जो कि हमारा प्लॉट होगा वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में. This curve is practically determined by running the machine as a separately excited generator on no load. ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो सेकेंडरी साइड हमारी है या जो हमारा लोड साइड है वहां पे हम कोई लोड कनेक्ट नहीं करते. This curve is also called as no load saturation curve as it gives the saturation characteristics of the generator. तो नो लोड को हम सैचुरेशन कर्व भी या सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. The second is short circuit test. The short circuit test is needed to determine the voltage drop across the armature at any load. In this testing of DC machine, the armature is short circuited with an ammeter to get the short circuit current. नॉर्मली हम जैसा ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं वैसे ही मशीन का भी करते हैं. तो इसमें हम आर्मेचर साइड जो होता है मशीन का, मशीन में एक्चुअली देयर इज टू साइड. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फील्ड साइड और फील्ड वाइंडिंग, सेकंड वन इज कॉल्ड द आर्मेचर साइड और आर्मेचर वाइंडिंग. तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम एक वायर से शॉर्ट कर देते हैं इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट करंट. So short circuit test gives the short circuit characteristics curve which show the variation of short circuit current as a function of excitation current. Next one is a load test. The load testing of DC machine is needed to determine the rating of the machine. तो मशीन की रेटिंग निकालने के लिए हम लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं. When we run a machine, then some energy is lost in the machine which convert into the heat and cause temperature rise. If a machine produce too much heat, then it can affect the insulation of the machine and ultimately it can cause the breakdown of the machine. Therefore, the load must be set to a value that it can operate within the temperature limit. The maximum value of the load that can be delivered by the machine without any harm is called the continuous rating of that machine. मतलब मशीन की वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि लोड को डिलीवर करते टाइम मशीन में कोई हार्म क्रिएट नहीं करती, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ द मशीन. ये हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग दी लोड टेस्ट. लोड टेस्ट परफॉर्म करके हम ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मशीन फाइंड आउट करते हैं. Next topic is the determination of efficiency.
तो जैसे ही हम ये लॉसेस फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दिस बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन और मोटर और एज वेल एज जनरेटर. So the formula of efficiency, we know that it is denoted by the eta and the formula is output upon input. आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? आउटपुट को हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस. अगर हम इनपुट में से लॉसेस को माइनस कर दें, सो वी गेट द आउटपुट. सो इन इक्वेशन नंबर सेकंड, द एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट. और अगर हम इसको आउटपुट के फॉर्म में लिखना चाहें तो इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस. सो इक्वेशन नंबर 3 में एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो यूज किया है, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को मैंने लिखा है आउटपुट प्लस लॉसेस. द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, like any other machine, is determined by the ratio of output power to that of the input power. There are three methods of determining the efficiency of a machine. First one is a direct method, second is indirect method, and third is regenerative method. The first equation is given an idea about the direct estimation of the efficiency. अभी हमने जो तीन इक्वेशन देखी हैं उसमें से जो पहला वाला इक्वेशन है, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, वो जो है वो डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द एफिशिएंसी बताता है. इन दिस मेथड द मशीन इज फुल्ली लोडेड एंड द आउटपुट इज डायरेक्टली मेजर्ड. This method of the measurement is only applied for small machines. मतलब ये जो डायरेक्ट लोडिंग का मेथड है ये हमारा स्मॉल मशीन्स के लिए एप्लीकेबल है. लार्ज मशीन के लिए हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते क्योंकि इसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं. So it is applicable or applied for only small machines. The second and third equations are given an idea about the indirect estimation of the efficiency. अब इनडायरेक्ट एस्टिमेशन निकालने के लिए हमने अभी जो इक्वेशन लिखी है जिसमें हमने इनपुट को रिप्लेस किया था आउटपुट प्लस लॉसेस से और आउटपुट को रिप्लेस किया था इनपुट माइनस लॉसेस. तो वो दो इक्वेशन हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए. इनडायरेक्ट मेथड इज हेल्पफुल of determining the efficiency of shunt bound generator and compound bound generators. In this method, it is required to determine the losses only. So the next topic is direct method of testing to find out the efficiency of DC motor. In this method, the DC machine is loaded directly by means of a brake applied to a water-cooled pulley coupled to the shaft of the machine. The input and output are measured and the efficiency is determined by the efficiency eta is equal to output power divided by input power. It is not practically possible to arrange loads for machine of large capacity. In this method, the DC machine is loaded
and the output and inputs are measured to find out the efficiency. For this purpose, two simple methods can be used. First is a brake test. In this method, a brake is applied to a water-cooled pulley mounted on the motor shaft as shown in a figure. One end of the rope is fixed to the floor by a spring balance S, and known mass is suspended at the other end. If the spring balance reading is S kg weight and the suspended mass has a weight of W kg weight, then net pull on the rope is equal to W minus S kg weight is equal to W minus S into 9.81 Newton. If R is the radius of the pulley in meters, then the shaft torque TSH developed by the motor is TSH is equal to W minus S into 9.81 into small r Newton meter. If the speed of the pulley is capital N RPM, revolution per minute or round per minute, then the output power is equal to 2 pi into N into TSH divided by 60. So is equal to, we can put the value of TSH, so 2 pi into N into W minus S into 9.81 into small r divided by 60 watt. This is the diagram for direct method. Let V is equal to supply voltage in volt, I is equal to current taken by the motor in ampere. So the input to motor is equal to V into I watt, means P is equal to V into I, and the efficiency is equal to output upon input is equal to 2 pi into N in bracket W minus S into small r into 9.81 divided by 60 into VI. The second is another method. The motor drives a calibrated generator, that is, one whose efficiency is known at all loads. The output of the generator is measured with the help of an ammeter and the voltmeter. So the output of motor is equal to generator output divided by generator efficiency. ये हमने efficiency के फॉर्मूले से ही निकाला है. Let V is equal to supply volt in volts, I is equal to current taken by the motor in ampere. So the input to the motor is equal to V into I. Thus, efficiency of the motor can be determined. Because of several disadvantages, direct loading method is used only for determine the efficiency of small machines. स्मॉल मशीन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए ही हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं. तो हायर रेटिंग या लार्ज रेटिंग मशीन्स के लिए हम डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ नहीं करते. वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट मेथड. तो चलिए देखते हैं indirect methods of testing to find out the efficiency of DC machine. The indirect method of testing to find out the efficiency of DC machine is three types. First one, Swinburne test. Second is
Hopkinson test or called regenerative test, and third one is retardation or running down test of the machine. तो सारे टेस्ट का हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विनबर्न टेस्ट। So the topic 4 is Swinburne test of DC machine. This method is an indirect method of the testing of a DC machine. It is named after Sir James Swinburne. Swinburne test is the most commonly used and simplest method of testing of shunt and compound wound DC machines which have constant flux. In this test, the efficiency of the machine at any load is predetermined. We can run the machine as a motor or as a generator. In this method of testing, no load losses are measured separately and eventually we can determine the efficiency. तो मतलब Swinburne टेस्ट से हम नो लोड लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। So this is the diagram for Swinburne test of DC machine. The circuit connection for Swinburne test is shown in a figure. The speed of the machine is adjusted to the rated speed with the help of the shunt regulator R as shown in a figure. इसमें हमने एक शंट रेगुलेटर R लगाया है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके हम मशीन की स्पीड को एडजस्ट करेंगे। The calculation of efficiency. Let I naught is the no load current. It can be measured by ammeter A1. ISH is the shunt field current. It can be measured by the ammeter A2. Then no load current or no load armature current is equal to I naught minus of ISH. Also let V is supply voltage, therefore no load power input is equal to V into I. चूँकि हमारे पास नो लोड करेंट I नॉट है इसलिए V into I नॉट in watts. In Swinburne's test, no load power input is only required to supply the losses. The losses occur in the machine mainly are iron losses in the core, friction and windage losses, and third one is armature copper losses. Since the no load mechanical output of the machine is 0 in Swinburne test, the no load input power is only used to supply the losses. The value of armature copper losses is equal to I naught minus of ISH square into RA. नॉर्मली हमारा जो कॉपर लॉसेस होता है वो होता है I square R, तो इसमें हमारे पास I की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी I naught minus of ISH. So the armature copper losses is equal to I naught minus of ISH का square into RA. Here RA is the armature resistance. Now to get the constant losses, we have to subtract the armature copper losses from the no load power input. Then the constant losses WC
is equal to V into I naught minus of bracket I naught minus ISH bracket close square into RA. After calculating the no load constant losses, now we can determine the efficiency at any load. Let I is the load current at which we have to calculate the efficiency of the machine. Then armature current IA will be in bracket I minus of ISH when the machine is motoring, and IA is equal to I plus ISH when the machine is generating mode. So next is a calculation of efficiency when the machine is motoring on load. So we know that the power input P is equal to V into I, and armature copper losses PCU is equal to I square into RA. Put the value of I, so is equal to in bracket I minus of ISH square into RA. The constant losses WC is equal to V into I naught minus of in bracket I naught minus ISH the whole square into RA. So the total losses, we can know that copper losses plus iron losses. So PCU plus WC. So the efficiency of the motor eta is equal to output upon input, or is equal to input minus losses divided by input, is equal to V into I minus of PCU plus WC divided by VI. By using this formula, we can calculate the efficiency. Next, calculation of efficiency when the machine operating in generating mode on load. We know that power input is equal to V into I. The armature copper losses PCU is equal to I2 into RA is equal to I plus ISH का whole square into RA. Constant losses WC is equal to, कांस्टेंट लॉसेस को ही हम कोर लॉसेस भी बोलते हैं. मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था जब लॉसेस हमने स्टडी किया था. तो कांस्टेंट लॉसेस मतलब आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस. सो WC इज इक्वल टू V इंटू आई नॉट माइनस ऑफ इन ब्रैकेट आई नॉट माइनस ISH होल स्क्वायर इंटू RA. सो द टोटल लॉसेस कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस PCU plus WC. Then the efficiency of the generator we can calculate by using this formula. Eta G is equal to output by input is equal to input minus losses divided by input. Put the values. So eta G is equal to V into IA minus of in bracket PCU plus WC divided by V into I. By using this formula we calculate the efficiency when the machine is operating into generating mode on load. Next is the advantages of Swinburne test. The main advantages of this test are: number 1, this test is very convenient and economical as it is required very less power from supply to perform the test. Number 2, since constant losses are known, the efficiency of Swinburne test can be predetermined at any load. So these are the main advantages of Swinburne test. Next is the disadvantages of Swinburne test. So the main disadvantage is number 1, iron losses is neglected through there is change in iron loss from no load to full load due to the armature reaction. Number 2, we cannot be sure about the satisfactory communication on loaded condition because the test is done on no load.
Number 3, we can't measure the temperature rise when the machine is loaded. Power loss can vary with the temperature. Number 4, in DC series motors, the Swinburne test cannot be done to find its efficiency as it is a no load test. So these are the disadvantages of Swinburne test. नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेटिव और हॉपकिंसन टेस्ट। तो ये जो हॉपकिंसन टेस्ट है ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में स्टडी करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिटार्डेशन और रनिंग टेस्ट क्या होता है और कैसे परफॉर्म करते हैं हम डीसी मशीन पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डीसी मशीन। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट इज रेफरेंसेस। These are the references. Electrical Technology by B.L. Thareja, electricaleasy.com, Electrical for You, and Circuit Globe, etc. So, anybody have any doubt, so please ask me. And thank you for watching this video.